Outlook HR Solutions, your recruitment partner. For information related to HR management, jobs, and interviews, subscribe to our channel, click the bell icon, and select all. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu, Telugu, apart from English language, and their usage in sentence. Each word is divided into 2 parts with the help of apostrophe symbol. So we need to stress on the word before the apostrophe for correct pronunciation. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, admire. To regard with pleasure, approval or respect. To look at with admiration. Admire को हम हिंदी में प्रशंसा करना कहते हैं. उर्दू में तारीफ करना. तेलुगु में श्रद्धिंचु. For example, she couldn't help but admire the breathtaking sunset over the mountains. Next word is admonish. To warn or reprimand someone firmly. To advise or urge against. एडमॉनिश को हम हिंदी में डांटना कहते हैं. उर्दू में डांटना. तेलुगु में हेच्चरिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर हैड टू एडमॉनिश द स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम. नेक्स्ट वर्ड इज अडॉप्ट. To take up and use as one's own. To legally take another's child and bring it up as one's own. Adopt को हम हिंदी में अपनाना कहते हैं. उर्दू में अपनाना, इख्तियार करना. तेलुगु में अनुकरिंचु. For example, the family decided to adopt a puppy from the local animal shelter. Next word is adorable. Inspiring great affection or delight, charming. अडोरेबल को हम हिंदी में प्यारा कहते हैं. उर्दू में काबिल तारीफ. तेलुगु में प्रियमायना. फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल किटन वॉज सो अडोरेबल दैट एवरीवन वांटेड टू टेक इट होम. नेक्स्ट वर्ड इज एडुलेशन. एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज, फ्लैटरी. एडुलेशन को हम हिंदी में खुशामद कहते हैं. उर्दू में खुशामद, तारीफ करना. तेलुगु में आत्मीयता. For example, the celebrity was accustomed to receiving adulation from fans wherever she went. Next word is advanced. Far on or ahead in development or progress. Advanced को हम हिंदी में उन्नत कहते हैं. उर्दू में सबसे आगे. तेलुगु में प्रगतिम्पु. For example, the advanced technology allowed for faster and more efficient communication. Next word is adventurous. Willing to take risk or to try out new methods, ideas or experiences. Adventurous को हम हिंदी में साहसी कहते हैं. उर्दू में मोहिमजो. तेलुगु में साहसमैना. For example, the adventurous couple decided to go backpacking through the remote mountains. Next word is adverb. A word that modifies a verb, adjective or other adverb expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. Adverb को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. उर्दू में ज़माना कुन. तेलुगु में क्रियार्थम. For example, in the sentence, she sings beautifully. Beautifully is an adverb. Next word is adverse. Preventing success or development, harmful, unfavorable. एडवर्स को हम हिंदी में प्रतिकूल कहते हैं. उर्दू में नुकसानदेह. तेलुगु में प्रतिकूला. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट फेस्ड एडवर्स वेदर कंडीशंस कॉजिंग डिलेज. नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी. डिफ़िकल्टीज, मिसफॉर्च्यून और हार्डशिप. अ स्टेट ऑफ सीरियस डिफ़िकल्टी और डेंजर. एडवर्सिटी को हम हिंदी में दुर्भाग्य कहते हैं. उर्दू में मुसीबत. तेलुगु में आपदालू. फॉर एग्जाम्पल, the team faced adversity but managed to outcome stronger in the end. Next word is advise. To offer suggestions or recommendations. To give counsel or guidance. Advice को हम हिंदी में सलाह देना कहते हैं. उर्दू में मशवरा देना, नसीहत. तेलुगु में सलाहालू. For example, I would advise you to consult with a financial advisor before making any major investments. Next word is advocate.
a person who publicly supports or recommends a particular cause or policy. एडवोकेट को हम हिंदी में प्रचारक कहते हैं, उर्दू में वकील, तेलुगु में प्रचारकुडु. For example, the lawyer acted as an advocate for the rights of the marginalized community. Next word is aesthetics, the branch of philosophy that deals with the principles of beauty and artistic taste. एस्थेटिक्स को हम हिंदी में सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, उर्दू में खूबसूरत, तेलुगु में आकर्षण शास्त्रम. फॉर एग्जाम्पल, द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग वॉज चोजन फॉर इट्स एस्थेटिक्स, blending modern and traditional elements. Next word is affair, an event or sequence of events of a specified kind or that has previously been referred to. अफेयर को हम हिंदी में कार्य कहते हैं, उर्दू में मामला, तेलुगु में व्यवहारम. फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल स्कैंडल बिकेम अ मेजर अफेयर इन द मीडिया. नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्ट, टू हैव एन अफेक्ट ऑन, टू मेक अ डिफरेंस टू. अफेक्ट को हम हिंदी में प्रभावित करना कहते हैं, उर्दू में असर डालना, तेलुगु में प्रभावितम चेयु. फॉर एग्जाम्पल, the news of the loss deeply affected everyone in the community. Next word is affection, a gentle feeling of fondness or liking, love and care. Affection को हम हिंदी में स्नेह कहते हैं, उर्दू में मोहब्बत, तेलुगु में प्रेमा. For example, the puppy showed affection by wagging its tail and licking its owner's hand. Next word is affidavit, a written statement confirmed by oath or affirmation, typically for use as evidence in court. एफिडेविट को हम हिंदी में शपथ पत्र कहते हैं, उर्दू में लिखकर जिम्मेदारी लेना, तेलुगु में शपथ पत्रम. फॉर एग्जाम्पल, द विटनेस साइंड एन एफिडेविट अटेस्टिंग टू द एक्यूरेसी ऑफ द इवेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज affiliate, to officially attach or connect to an organization, a person or organization officially connected to a large body. affiliate को हम हिंदी में संबद्ध कहते हैं, उर्दू में मुतासिल, तेलुगु में संबंधिंचिपोवडम. For example, the local radio station decided to affiliate with a national broadcasting network. Next word is affinity, a natural liking or sympathy for someone or something, a similarity of characteristics suggesting a relationship. Affinity को हम हिंदी में समानता कहते हैं, उर्दू में दिलचस्पी, लगावत, तेलुगु में अनुभवम. For example, she felt an affinity for the coastal town where she spent her childhood. Next word is affirm, to taste or declare that something is true or existing, to assert strongly and publicly. affirm को हम हिंदी में पुष्टि करना कहते हैं, उर्दू में तस्दीक करना, तेलुगु में निर्धारणा. For example, the witness had to affirm the accuracy of the statement under oath. Next word, affirmative, expressing agreement or consent, positive. affirmative को हम हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, उर्दू में राज़ी होना, तेलुगु में अनुमोदना. For example, she gave an affirmative nod indicating her approval of the proposal. Next word is affluent, having a great deal of wealth, rich. affluent को हम हिंदी में धनी कहते हैं, उर्दू में अमीर, तेलुगु में संपन्नुलु. For example, the neighborhood was known for its affluent residents and luxurious homes. Next word is afford, to have enough money to pay for, to be able to do without adverse consequences. afford को हम हिंदी में संभालना कहते हैं, उर्दू में काबिल, तेलुगु में स्तोमता. For example, they couldn't afford a new car, so they opted for a used one. Next word is affordable, inexpensive, within one's financial means. affordable को हम हिंदी में सस्ता कहते हैं, उर्दू में काबिल बर्दाश्त, तेलुगु में अर्हता. For example,
The new housing development aimed to provide affordable homes for young families. Next word is affront, an action or remark that causes outrage or offense. affront को हम हिंदी में अपमान कहते हैं, उर्दू में तौहीन, हमला, तेलुगु में निरादरम. For example, his insensitive comment about her appearance was seen as a deliberate affront. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.